ethanamide. So just रट लो इसको. These are the primary 4 drugs in anti-TB treatment. Mainly these are bactericidal. Cidal means killing. So these primary drugs are bactericidal. So ethambutol is also having 2 phases. In 15 milligram per kg it is bacteriostatic, at 25 milligram per kg it is cidal. So it is active in acidic medium. We'll discuss these drugs later. Just try to understand these are the 4 primary anti-TB drugs. Okay? Any confusion? Fine. No, why not only one drug for as an anti-TB treatment, like only isoniazid? Why not only one drug? चलो एक ड्रग 6 महीना दे देते हैं, क्यों ये 4 ड्रग्स देना है? So there is a study so that around 1 in 10 raised to 6 may be isoniazid resistance. 1 multiplied by 10 raised to 8 may be rifampicin resistance, and 1 in maybe 10 raised to 8 may be isoniazid plus rifampicin resistance. Maybe 10 raised to 10, these are all hypothetical things. Maybe ethambutol resistant, maybe pyrazinamide resistant. So there is no point in wasting time. So 4 drugs all together, एक साथ दे दो, ठोक दो उसको, खत्म कर दो. क्योंकि अभी मैं प्लेन आइसोनियाजाइड दूंगा 6 महीना, उसके बाद रेजिस्टेंस आएगा, तो उसके बाद रिफैम्पिसिन दूंगा. That is unfair. Trials are there. The most important trial of India is Madras trial. Now it is Chennai, but it was Madras trial for anti-TB treatment. There were 2 groups. One group was given special treatment like raised, badam ka halwa, non-veg, raised adequate, and the second group was routine काम करो, no special treatment. But there was no difference in outcome of both the groups. So दोनों ने अगर रेगुलर एंटी टीबी ट्रीटमेंट लिया तो टीबी का पेशेंट काम कर सकता है. he can take regular, he can continue his regular work, but he may be infected. ऐसे डर है ये समाज में टीबी फैलाएगा, तो इसके लिए पहले एंटी टीबी ट्रीटमेंट चालू करने के 2 to 3 weeks he will be actively infective, but once the bacillary load will be low, once the anti-TB drugs start acting, it will be not infective. So first 15 to 21 days he should take, he can be remain isolated, and then he can continue his work. So no problem. Now we will discuss drugs of tuberculosis. Now we will discuss only primary drugs. So first is isoniazid. We will discuss main points. It is the most important 2 drugs, one of the 2 most important 2 drugs in the anti-TB treatment. It is bactericidal and it causes mainly neuropathy. We will be discussing main highlights only. Hepatitis, and it inhibits cell wall synthesis. So as discussed, so pyridoxine is, this is vitamin B6 which should be supplemented while giving isoniazid, that is for sure. Pyridoxine देना ही है. The dose is in adults is 10 milligram per day, and glows and socks type of neuropathy, peripheral neuropathy is the main side effect of patient will come, doctor हाथ में झुंझुन नहीं आता, पैर ऐसे बधिर हो जाता. So it will be very difficult to treat it, but before that you give 10 gram pyridoxine per day. So now अगर वो देख के भी हो गया
तो you give 100 milligram pyridoxine for 10 days once daily. It is the treatment of peripheral neuropathy. Now hepatitis altogether we'll discuss later. These are the two major side effects. बाकी भी है, then we'll discuss later. Okay. So hepatitis जिसको jaundice है, जिसको liver के issues है, with caution we have to use. Second drug is rifampicin, also called as Rcin or R. It also causes hepatitis, mainly flu-like syndrome. rifampicin चालू कर दिया, पूरा फीवर रैश आ जाएगा, उसको वायरल की बैठ गया ऐसे लगेगा, तो ड्रग टॉलरेट ही नहीं होगा ये ड्रग, और पेशेंट विल स्पेशली कंप्लेन सर यूरिन में खून आ रहा है. Unless it is not counseled, patient will rush, रात में फोन कर देगा जिस दिन आपको रिफेम्पिसिन दिया है, सर यूरिन में से ब्लड आ रहा है. Always counsel the patient कि rifampicin can cause redness in there, reddish orange, sometimes sweating will be there. So always tell the patient कि rifampicin is excreted in urine, so the color of urine will be reddish orange. पहले दिन काउंसलिंग कर दो उसको, so आगे तकलीफ नहीं होगा. एंड हेपेटाइटिस इसका मेन प्रॉब्लम है, अर्थराल्जिया, अर्थराइटिस, सब इश्यूज है. रिफेम्पिसिन इज वेरी टॉक्सिक ड्रग. अभी रिफेम्पिसिन ये नॉन एंटी टीबी कुछ यूजेस है उसके. सबसे इम्पोर्टेंट है मेथिरिसिलिन रेजिस्टेंट स्टाफ ऑरियस में ये यूज होता है. सो नॉन टीबी यूजेस ऑफ रिफेम्पिसिन और बहुत सारे यूजेस है, लेकिन एमआरएसए में बहुत कॉमन है. और एनटीएम में वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन में रिफेम्पिसिन का यूज है. तो वो क्या है, we'll discuss later. I'm just telling the highlights. Then third is pyrazinamide. Pyrazinamide, PZA, also called as ZA. अब इसको P क्यों नहीं रखा समझ में नहीं आता, उसको Z क्यों कॉम्प्लिकेट किया, वो ठीक है, अभी हो गया. एक्चुअली इसका P चाहिए था ना शॉर्ट फॉर्म, अभी वो हो गया, वो इसको Z बोलते हैं. एक्चुअली आइसोनियाइड को एच क्यू बोलते हैं, वो भी इशू है, उसको आई बोलना चाहिए था. रिफेम्पिसिन को आर बोलते हैं, इसको जेड बोलते हैं. ठीक है, अभी हो गया, अभी इट्स रूल तो फॉलो इट. वेरी डिफिकल्ट टू रिमेम्बर बिकॉज आदत लगनी चाहिए था. इट इज ऑल्सो हेपेटाइटिस कॉजिंग ड्रग. इट इज साइडल ड्रग. सो बैक्टीरियोसाइडल हेपेटाइटिस, और मेनली यूरिक एसिड की इशू है, जॉइंट पेन्स. यूरिक एसिड बहुत बढ़ जाता है, पेशेंट सर बहुत दुख रहा है, so give him analgesic, check his uric acid level and give uric acid. Gouty arthritis precipitate हो जाएगा, uric acid बढ़ जाएगा उसका. So it is better कि तुम मॉनिटर करो. मेरा फॉर्मूला है, you give treatment, पहला 15-20 मिनट टीबी ट्रीटमेंट चालू करने के पहले you personally talk to the patient कि ये ऐसा प्लान है, 6 महीना लगेगा. 6 महीना बोले बराबर, पेशेंट डर जाओ, सर 6 महीना थोड़ी ट्रीटमेंट होता है, तो पहले शॉक में जाता. लेकिन इट्स अ रूल, यू हैव टू सीट एंड काउंसिल. तुम्हारा काउंसिलर को बिठाओ साथ में, उसको ठीक से समझा, बोलो बीच में डिस्कंटिन्यूएशन नहीं करना है स्ट्रिक्टली, बिकॉज ही अगर उसने डिस्कंटिन्यू कर दिया, ही कैन बी हैजर्ड टू सोसाइटी. वो एक्टिव हो गया तो फिर से वो पूरे सोसाइटी को इन्फेक्ट करेगा, वो खुद ड्रग रेजिस्टेंट टीबी बन जाएगा, टीबी पेशेंट, और सोसाइटी भी इन्फेक्ट करेगा. दिस और मॉरल रिस्पांसिबिलिटी टू इन्फॉर्म द गवर्नमेंट कि पेशेंट टीबी का है. लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटीज को हमेशा इन्फॉर्म करो. ऑलवेज टेक हेल्प ऑफ लोकल बॉडीज टू इन्फॉर्म द स्पेसिफिक गवर्नमेंट अथॉरिटीज. ये एक्टिव टीबी का पेशेंट मेरे पास है, ये नोटिफाइबल डिसीज है, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट हैज टू बी फॉलोड अप ऑल्सो. क्लोज मॉनिटरिंग करना है. गवर्नमेंट हेल्प्स, हेल्थ केयर वर्कर्स आर रियली हेल्पिंग फॉर टीबी. अपना नासिक में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है रिगार्डिंग टीबी कंट्रोल प्रोग्राम. पूरा टीम अपने को हेल्प करता है, पेशेंट को काउंसलिंग करता है, और गवर्नमेंट कुछ तो भी पेज पेशेंट ऑल्सो. पेशेंट को आराम करना होता है, तो पेशेंट गवर्नमेंट कुछ स्पेसिफिक अमाउंट पेशेंट को देता भी है. मेनली अपने को एलिमिनेट करना है टीबी, तो ये टीम वर्क है. और वी आर रियली हैप्पी विथ गवर्नमेंट कि इस टीबी में दे आर वेरी गुड एट फॉलोअप्स ऑल्सो. इससे
इससे पेन किलर देना है, बाकी भी चीजें साइड इफेक्ट में है, और सबसे इंपॉर्टेंट इथेम्बुटोल, ऑल्सो कॉल्ड एज ETBE। ये 15 मिलीग्राम पर केजी ये स्टैटिक और 25 मिलीग्राम पर केजी साइडल है। तो 25 क्यों नहीं देने का, 15 ही क्यों देने का? क्योंकि तुम जितना ज्यादा डोज देंगे उसका ऑप्टिक न्यूराइटिस से सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मेन साइड इफेक्ट इज ऑप्टिक, फील्ड ऑफ विजन कम हो जाता है, ब्लाइंडनेस हो सकता है। तो हमेशा जब तुम साइडल डोज देंगे पहले बेसलाइन फील्ड ऑफ विजन कर लो, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से चेक, और फिर फॉलोअप करो। बहुत बार फील्ड ऑफ विजन पर डिमिनिश होगा, immediately we have to reduce the dose or stop ethambutol because optic neuritis can precipitate blindness। इसके लिए जो विजुअली कॉम्प्रोमाइज्ड है उनको प्रेफरेबली 15 मिलीग्राम ही दो, डोंट यूज 25 मिलीग्राम। या फिर तुमको साइडल देना ही है तो विथ वर्ड ऑफ कॉशन वार्निंग है कि यू हैव टू चेक द आई। क्लोरोक्विन इज आल्सो ड्रग which can cause optic neuritis. So which are the other drugs? So chloroquine can cause optic neuritis. So important is HRZE, isoniazide, rifampicin, pyrazinamide, ethambutol. For 2 months is intensive phase plus 4 months is HRE. So total 6 months anti-TB treatment minimum. This is for drug sensitive tuberculosis. Got it? Now got it? Any confusion? Right. Now we will come with few definition. So mono-resistant TB. So it is resistant for only one drug. So this is mono-resistant. Now the worst is drug resistant TB, DRTB. It is more or less either resistant to isoniazide or rifampicin. But MDR-TB, it is resistant to isoniazide plus rifampicin. This is the nightmare. It is resistant to isoniazide plus rifampicin. It is by default it is multi-drug resistant TB. Now XDR TB, XDR, now TDR, extended drug resistant, that is MDR plus H plus R plus some levofloxacin or moxifloxacin plus injectable amikacin, kanamycin, any injectable kanamycin. So this is XDR TB. TDR means total drug resistant. This is the worst thing to happen because he himself is bad, and if he infects his family members or his colleagues or his society, he is a very big health hazard for us. So many times to pick up that, the government has classically, it has said eliminate tuberculosis. The main target is to give the proper treatment to reduce the morbidity, mortality, and stop the spread. That is the main target of elimination. So tuberculosis is latent tuberculosis, like health care worker or the person who is harboring an active TB patient in the family. He may also he may be harboring TB bacilli, so that is latent tuberculosis. Second is active TB, means the patient is actively infected himself with tuberculosis. That is active TB. So these are the main TB targets which are to be consumed. So if my immunity goes low, I may suffer from tuberculosis. So what has to be done? So one side doesn't fit all.
Is it right? One side doesn't fit all. For example, if I take one t-shirt, so it will fit you? No. It will fit you? No. Every size is different. But one size fits all. I'll tell you how. Like, should I smoke? No. Should I take alcohol? No. Should I do active exercises? Yes. So one size fits all? Yes. So two different schools of thought. So to avoid tuberculosis, we have to be actively exercises. And second thing, diet should be good. Third is control of diabetes or some immunocompromised status. You have to strictly control. Diabetes and TB go hand in hand. Uncontrolled sugars will increase TB. TB will increase uncontrolled diabetes. So once TB is controlled, diabetes will be controlled. Other way around, if HIV is there, if HIV increases tuberculosis, TB increases HIV. So both should be controlled simultaneously. Especially HIV has almost 90% of patients of HIV are potential candidate to get infected with tuberculosis. So they are at high risk. So they should be actively monitored. Third is weight. Obesity is a big challenge now. So we have to control the weights. Initially malnutrition was a problem. Now obesity is a problem. We have to control the weights. And last but not least, a close monitoring means if the curve lasts more than 51 to 21 days, go to the doctor and just confirm that it is not active TB or something else. So TB usually doesn't present acutely, like 1-2 days fever and now this is TB. It doesn't usually, but it can be. We had picked up 3 days of fever and pleural effusions, 3 days of fever and convulsions and TBM. We had picked up.